Dear students, in this video we are going to study about lesson 2, the King's Magic Drum. You all know that drum is a musical instrument, and here a king, who is the main character of the story, had a drum which was a magic drum. This story will tell about how to deal with your neighborhood and community. Warm up. Do you play any musical instruments? Have your parents taken you to any music concert? Who is your favorite musician? Take turns to tell your partner. The story is based in the country of Nigeria, which is located in Western Africa. Here, the story is located here in Nigeria. The story which we are going to read is an extract from the Nigerian folk tale. It is about a king who has a magic drum and a tortoise who wants to take the drum from the king. The main characters in the story are the king and the tortoise. Ephraim Duke was an ancient king of Calabar. He was a peaceful man and did not like war. He had a wonderful drum, the property of which, when it was beaten, was always to provide plenty of good food and drink. So whenever any country declared war against him, he used to call his enemies together and beat his drum. Then, to the surprise of everyone, instead of fighting, found tables spread with all sorts of dishes, fish, fufu, palm oil, chopped soup and cooked yams, and plenty of palm wine for everybody. In this way, Ephraim Duke kept all the country quiet and sent his enemies away with full stomachs and in a happy and contented frame of mind. There was only one drawback of possessing the drum, and that was, if the owner of the drum walked over any stick on the road or stepped over a fallen tree, all the food would immediately go bad. Moreover, 300 Egbo men would appear with sticks and whips and beat the owner of the drum and all the invited guests very severely. So, there were two qualities of the drum. Ephraim Duke जो थे, कैलाबर के एंशियंट किंग, पुराने किंग, उनके पास एक मैजिक ड्रम था. किंग मीन्स उन्हें लड़ाई, युद्ध पसंद नहीं था. तो जब भी उनके एनिमीज़ उन पर अटैक करते थे, वो अपने ड्रम को बीट करते थे. ड्रम की ये क्वालिटी थी कि उसको बजाने पर बहुत अच्छे अच्छे फूड डिशेस आ जाते थे, और फिर वो अपने एनिमीज़ को फुल स्टमक गुड फूड और गुड ड्रिंक्स पिलाकर कंटेंटेड मीन्स वेरी सेटिस्फाइड करके वापस घर भेज देते थे. बट उस ड्रम की एक बैड क्वालिटी थी. अगर ड्रम का ओनर किसी गिरे हुए स्टिक के ऊपर से या गिरे हुए ट्री के ऊपर से अपने पैर क्रॉस करके चला जाए, तो वो सारा फूड ख़राब हो जाता था. और एग्बू मैन आते थे और वो लोग विद स्टिक्स एंड विप्स, स्टिक्स और विप्स यानी कि चाबुक, इसका इस्तेमाल करके सारे लोगों को, सारे गेस्ट्स को बहुत मारते थे. ड्रम की वजह से किंग हमेशा अपने सब्जेक्ट्स यानी अपनी प्रजा को बुलाते थे. उनमें वाइल्ड एनिमल्स भी होते थे, क्योंकि ये स्टोरी इतनी पुरानी है जिस वक्त वाइल्ड एनिमल्स फ्रेंडली होते थे मैन के साथ और उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करते थे, ट्रबल नहीं क्रिएट करते थे, एक दूसरे को मारते भी नहीं थे फीस्ट पे जाने पर, और सारे लोग वहाँ पर आकर फीस्ट एंजॉय करते थे. दिस इज़ अ स्टोरी. सो इन द स्टोरी पीपल एंड ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स कैन टॉक, बट नॉट इन रियल. और सारे लोग जो हैं वो एनवियस थे उस किंग के ड्रम से. एनवियस मीन्स जेलस, वांटेड टू पॉजेस इट. हर कोई चाहता था कि वो ड्रम का मालिक बन जाए, बट किंग वुड नॉट पार्ट विद इट. किंग अपने ड्रम से कभी भी नहीं अलग होना चाहता था. One morning, Ikor Edem, the king's wife, who is Ikor Edem, the queen,
took her little daughter down to the spring to wash her, as she was covered with yaws, which are bad sores all over the body. किंग की जो बेटी थी उसकी पूरी बॉडी पे घाव थे। उसे साफ करने के लिए स्प्रिंग यानी झरने के नीचे नहलाने के लिए अपनी बेटी को लेकर गई। द tortoise happened to be up a palm tree just over the spring, cutting nuts for his midday meal. And while he was cutting, one of the nuts fell to the ground just in front of the child. वहाँ एक tortoise palm tree पर चढ़कर nuts कट कर रहा था for his midday meal, for his afternoon lunch. और एक नट उनमें से नीचे गिर जाता है in front of the child, in front of the daughter of the king. The little girl, seeing the good food, cried for it. छोटी सी लड़की ने जब नट देखा तो मांगने लगी और उसकी मदर ने वो नट उठाकर उसे खिला दिया। When the tortoise saw this, he climbed down the tree and asked the woman where his palm nut was. She replied that she had given it to her child to eat. Then the tortoise, who very much wanted the king's drum, thought he would make plenty palaver